So today we will study about the correlation with the help of scatter diagram. With the help of scatter diagram, right? So if you have the two variables x and y, because we are always working for the bivariate distribution, we are working for the two variables x and y. So you will plot the values of x, you will plot the values of y, then you will have a some types of points. So these are the scattered points. अब इस जो आपके सामने ये जो मैंने प्लॉट किया हुआ है, सो दिस इज अब देखिए किस तरह से पॉइंट जो है स्कैटर्ड है, ठीक है। लेकिन जो उनकी स्कैटर्डनेस का एक डायरेक्शन है वो पॉजिटिव डायरेक्शन है. सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट हियर वी आर गेटिंग द पॉजिटिव कोरिलेशन. So if there are different ways to represent the scatter diagram according to the values of x and y. Suppose we have the values of x and y, and if both the values make a सीधी एक straight line बना रहे हैं, ठीक है, कि आप प्लॉट कर रहे हो, इस तरह से प्लॉटिंग हो रही है कि सारे के सारे पॉइंट्स को ज्वाइन करके सीधी एक स्ट्रेट लाइन बन रही है. सो दिस इज एक्स एक्सिस एंड दिस इज अ वाई एक्सिस. दिस इज कॉल्ड परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. This is called perfect positive correlation, and in this case r, the value of r is equal to +1. And one more thing, जो डायरेक्शन है, देखो जैसे जैसे आपका x बढ़ रहा है उसी तरह आपका जो है y बढ़ रहा है. अब आप देखो, सपोज करो आप इस तरह से प्लॉट कर रहे हैं, ये इधर x एक्सिस का पॉइंट है, जैसे जैसे x इंक्रीज कर रहा है, x इधर को इंक्रीज कर रहा है, y इधर को इंक्रीज कर रहा है, उसी तरह सारे पॉइंट्स जो है अगर एक लाइन के अबाउट ही सारे पॉइंट्स आ जाते हैं, ऑल द पॉइंट्स लाइज ऑन अ सिंगल लाइन, right, then we can say that this is an example of perfect positive correlation, right? Now if it means agar ek there is a if there is a unit change in the value of the variable x, the value of the variable y changes in the same direction, then this is the example of, first of all we can say it is a positive correlation. And if all the points, both of the points of x and y lies on the same line, then this is called a perfect positive correlation. Okay. Now the next is, so we are finding the correlation. We are just an idea about the correlation between the two variables through scatter diagram. If the value of x is increasing but the value of y is decreasing and all the points lie on the same line. अब suppose करो आप यहाँ से शुरू करेंगे. First of all you have got the highest value here, ठीक है जी. Then the next point, here you have got the next value. So your values are decreasing. As x increases, y decreases. जो deviations है, जो उसकी direction है, वो change हो रही है. जैसे जैसे x बढ़ रहा है, लेकिन y जो value है वो कम value दे रहा है. It means, and one more thing, it means this is a kind of negative correlation. And if all the points of x and y lies on the same line in the scatter diagram, it means this is an example of perfect negative correlation. In this case, the value of r is equal to -1, right? So this is the first case for the scatter diagram. This is the second one. Now I'm coming to the third one. Third one, if अब अगला केस ये है कि r की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है, लेकिन जो सारे पॉइंट्स हैं वो एक लाइन पे नहीं आ रहे. अब जैसे आपने पीछे प्लॉट किया, ये इस तरह से, ये इस तरह से पॉइंट्स प्लॉट हो रहे हैं, ठीक है. सारे पॉइंट्स को एक लाइन में नहीं आ रहे, लेकिन डायरेक्शन क्या है कि अगर x इंक्रीज कर रहा है और y भी क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है. इन दिस केस यू कैन से दैट r इज ग्रेटर देन 0. Second, fourth case. This is x-axis and this is y-axis. And here, अगर जो डायरेक्शन है हमारी स्कैटर डायग्राम की, यू हैव प्लॉट द पॉइंट्स, ठीक है.
ये सारे पॉइंट्स इस तरह से प्लॉट हो रहे हैं लाइक दिस, तो इसकी डायरेक्शन देखो नीचे को जा रही है, इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है. So this is the case of negative correlation and this is the positive correlation. In this case you will write r is less than 0. जितने पॉइंट्स लाइन के अबाउट कॉन्सेंट्रेट होंगे, अगर ये सारा जो एक स्कैटर डायग्राम है, ये जो पॉइंट्स हैं, इफ दे आर concentrate about a single line, then we can say that this is a highly positively correlated data. और इस केस में highly negatively correlated data. So I am just explaining it again. तरह से अब ये लाइन है, ये परफेक्ट लाइन है बेटा, ये वाली दिस वन. ठीक है, अगर हमारे पॉइंट्स इसके बिल्कुल आसपास क्लस्टर कर रहे हैं इस तरह से, so you can say that this is a highly positively correlated data. ठीक है जी, हाईली पॉजिटिवली कोरिलेशन, हाई पॉजिटिवली डाटा नहीं कहेंगे, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन कह सकते हैं इसको, हाई पॉजिटिव कोरिलेशन. ठीक है जी. और दूसरा, अगर ये लाइन थी हमारी परफेक्ट की, अगर हमारे जो पॉइंट्स हैं इसके बिल्कुल पास जो है, जो स्कैटर डायग्राम हमने बनाया उसके आसपास बिल्कुल पास में क्या कर रहे हैं, उसको कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं उसके आसपास, then you can say that this is a highly negative correlation. देखो दोनों केसेस में बेटा here is r greater than 0, here is r less than 0. ठीक है, और अगर सपोज करो अगर हमारा ये परफेक्ट कोरिलेशन की लाइन है और आपका डाटा देखो स्कैटर्ड ही बहुत दूर दूर हो गया इस तरह से. ठीक है जी, लाइक दिस, ये then this is the case of low degree of correlation. उसको हम कहेंगे high degree of correlation. This is low degree of correlation between the variables x and y. And number 8, x and y है same. We have this line as r is equal to -1. और जो पॉइंट्स की जो पॉइंट क्लस्टर हो रहे हैं वो दूर हो रहे हैं. ठीक है जी, it means this is a low degree of positive correlation, this is a low degree of negative correlation. This is a low degree of negative correlation, right? And the last is number 9. When अगर आपके जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से बन गए, अगर आपके जो पॉइंट्स हैं वो इस तरह से बन गए, राइट? So can you tell me which kind of relation it will have? They are not clustered about the straight line. ये एक सर्कुलर फॉर्म में बन गए. इस केस में r की वैल्यू क्या होगी? 0. In this case, r will have is equal to c. Clear? So I am compiling all the results for the scatter diagram. Scatter diagram for correlation analysis. So this is the very first figure. So this is r greater than 0. Here you will write in the opposite direction. They are clustered about the straight line. ठीक है जी, इसमें डिफरेंस हो सकता है कि अगर ये लाइन के बहुत पास में है, it means that there is a high degree of correlation. अगर ये लाइन से बहुत दूर है, it means there is a low degree of correlation. And अगर ये सर्कुलर फॉर्म में आ गए इस तरह से, it means here is r is equal to 0. और अगर सारे पॉइंट्स एक ही लाइन के ऊपर आ गए, राइट, इस केस में r क्या है? +1. और लाइन आपकी क्या बनी? y is equal to x.
उसी तरह जब आप इस डायरेक्शन में लिख रहे हैं तो इस केस में अब ये लाइन देखो, अगर ये वाली लाइन आप यहां से ले रहे हैं, इट मीन दिस लाइन passes to the origin, दिस लाइन doesn't passes to the origin, so it will have the form, ये इस तरह से कोई लाइन प्रेजेंट आप करेंगे इसको, ठीक है जी। एंड व्हाट इज दिस, दिस इज C0, and in this case there is a perfect negative correlation. Is it clear? Right? So this is all about how to have a rough idea from the scattered diagram to check the correlation between the two variables.